Welcome to Kanishta Coders. In today's lecture, we are going to discuss lesson number 6 of code.org, in which we will be discussing about the various loops that are available. We will be using and understanding the repeat block which is available. Let us start with the first activity that we have. In this activity, the squirrel which is present out here has to go to the nut. स्क्विरल को नट पे जाना है। इसको जाने के लिए हम लोग काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कितने ब्लॉक्स हमें जाना है? 1 2 3 4 एंड 5। रिमेंबर, यू कैन नॉट गो ऑन द आइस। आप ये ब्रोकन आइस के जो पीसेस हैं इस पर नहीं जा सकते। आपको बहुत आराम से लेकर जाना है स्क्विरल को इस नट तक। कैसे जाएंगे? हमारे पास जाने के बहुत सिंपल तरीका भी हो सकता है कि हम लोग वेस्ट साइड को 5 टाइम्स लें। तो इसीलिए हमने 5 टाइम्स लिया रिपीट में, एक वेस्ट ब्लॉक को अंदर डाला है। वेस्ट को अंदर डालने के बाद द स्क्विरल विल एक्चुअली रीच टू दिस पोजीशन 1 2 3 4 and 5. Okay, but now what has to be done? The squirrel has to be taken to this position and then here. So this means how many times towards the shoes? 1 and 2. 2 times towards the shoes. So when you have more than one block, you can also use a repeat. But see over here, this repeat does not have 2 in it. So we can just simply take one time south and one more time south. So we'll have 2 times souths which are available over here. Let's click on reset and then click on run. एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी और पांच बारी हम लोग वेस्ट गए। एक बारी और दो बारी हम साउथ गए। काफ़ी सिंपल है। लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे चलते हैं। लेसन नंबर 7 पे चलते हैं। code.org के प्री एक्सप्रेस कोर्स के बारे में हम लोग बात करते हुए चलते हैं। हम लोग फोर्थ के अंदर चलेंगे क्योंकि थर्ड एक वीडियो थी, तो हम फोर्थ में चलेंगे। फोर्थ में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे पास एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जिसके अंदर देयर इज दिस नंबरिंग। आप अपने यहाँ पे एक नंबरिंग देख पा रहे होंगे। 1 सिग्निफाई करता है कि दिस ब्लॉक कैन बी यूज्ड ओनली वंस। 2 सिग्निफाई यूज करता है कि आप ये ब्लॉक को दो बारी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जितनी बारी जितना नंबर ऊपर लिखा होगा आप उतनी बारी ही उस सिंगल कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यूज़ करते हुए देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। वी विल टेक अ रिपीट ब्लॉक। रिपीट ब्लॉक हमने लिया है। हाउ मेनी टाइम्स हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 5 बारी हम लोगों को इस नट पे जाने के लिए ध्यान रखना है। 5 टाइम्स टुवर्ड्स द वेस्ट। ये देखिए, जैसे ही आपने यहाँ से एक W लिया, एक वेस्ट लिया आपने, पहले वेस्ट की वैल्यू 1 थी, अब वेस्ट की वैल्यू क्रॉस होकर 0 हो गई। दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट यूज द वेस्ट मोर बिकॉज इट हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। जब कोई चीज़ आपकी एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है तो हम उसको और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम लोग सिंपली रन को दबाएंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। 1 2 3 4 and 5. I hope it's clear to everyone. Let's move on to the next activity. Is the fifth activity. Let us enlarge this and see. Okay, let's see हमारे को कितनी बारी जाना है। इसके अंदर कुछ चीज़ मिसिंग है, मतलब आपको डीबगिंग भी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया उसका भी ध्यान रखना है आपको कि डीबगिंग में क्या होता है। सो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू गो टूवर्ड्स द ईस्ट? 4 टाइम्स। इट इज़ ऑलरेडी डन परफेक्टली वेल। अब आपको कितनी बारी हमारे को साउथ की तरफ जाना है? 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम्स टुवर्ड्स द साउथ की तरफ जाना है। अब यहाँ पे जाके देखिए, 4 यहाँ पे पुट किए। जैसे ही आपने एक लिया वो 1 की वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो गई है और अब आप 4 टाइम जा सकते हैं। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इट्स 1 2 3 एंड 4, देन 1 2 3 and 4, and then you finally reach the end point. Let's move on to the next one. Okay, let's see over here what is available in this set of puzzle, which is the puzzle number 6 of lesson number 6 code.org pre-express course. Okay, in this one what you have to take into consideration is that you have to take 1 2 3 4. So there are 4 hops that the squirrel has to go in towards the east direction perfectly well. 1 2 3 and 4. 4 times you have to go towards the south. This is also now correct. Now after that 1 2 3 and 4. 4 times you have to go towards the west direction.
So you will take this and you look, it's 1 at the moment. When you drag it over here, it becomes 0. Now let us click on run. 1, 2, 3, 4 times east. 1, 2, 3, 4. 4 times south. 1, 2, 3, 4. 4 times west. I hope it's clear to you all. Now let's move on to the seventh activity, which is in lesson number 6 of the pre-express code of code.org. In this, what we have to do, it's very simple. 1, 2, 3, 4. 4 times in which direction we have to go? Towards your shoes, correct? So we're going to take 4 times repeat and we have to take the south direction. After moving this, what we have to do? 1, 2, 3, 4. 4 times towards which direction? West direction. So we are going to take a repeat block, make it 4 times towards the west. After that, what will we do? 1, 2, 3, and 4. 4 times we will go on the topward direction. Topward means the north direction. So let's take this repeat 4 times towards the north direction and let's run it. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. In this way, we are reaching the destination position and the squirrel is able to have the nut. Let us move forward and try to solve the next one, which is available, which is the eighth one. Okay, in this one we have to be very careful as it has been already solved. Let us now debug it and see where it has gone wrong. It is 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 times towards the east, perfectly well. 1, 2, 3, 4, and 5 times. Oh, it should be 5 times, not 3 times. This is wrong over here. Let us correct it. It should be how many times? 5 times over here. After that, 1, 2, 3, and 4. It should be 4 times towards the west, correct? 1, 2, 3, and 4. 4 times towards which direction? We have to go towards the, let's see over here, south direction. It's perfectly well now. Let's try it. 1, 2, 3 times. 1, 2, 3, 4, 5 times north. 1, 2, 3, 4. 4 times west. 1, 2, 3, 4. 4 times towards the south. It's perfectly well. Let us move forward and try to understand the ninth puzzle. Over here, you will be able to see that. Let us repeat this and see over here. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 times. So what we have to do? 5 times we have to go in the east direction. After that, it's 1, 2, 3, 4, and 5. 5 times we will be going again. In which direction we will be moving? We will be moving 5 times towards the south direction. Make sure you take into consideration that every time you're removing a block, it is changing from its value 1 less because you're using that block. Now again, it's 1, 2, 3. 3 times which direction we will be moving to? We will be taking into consideration 3 times towards the west block. After moving forward, let us take this squirrel 1, 2, and 3. 3 times towards the north. So let's take a repeat block, make it 3 times, and it's moving 3 times towards the north direction. Let's see the answer. 1, 2, 3, 4, and 5 times east. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 times south. 1, 2, 3 times west. 1, 2, 3, 3 times north. Let's move on forward. Let's move to the activity number 10 and see what is there in the activity number 10 to understand in the pre-express course 2020 of code.org. Okay, it's a challenge puzzle, so be very careful. Click on I am ready. After you click on I am ready को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जिगजॉ पजल है. 1, 2, 3, 4 and 5. Perfectly well. मीन्स आपको 5 टाइम्स रिपीट ब्लॉक लेना है और उसके अंदर कौन सा डायरेक्शन डालना है? साउथ. Now let us move forward. 1 and 2. 2 times which directions you have to go? 2 times आपको repeat block लेकर कहाँ पे जाना है? आपको towards the west direction. After that, what will you do? You will do 1, 2, 3, 4 and 5.
5 टाइम्स आप लोग कहाँ पे जा सकते हैं, लेट्स टेक अ रिपीट ब्लॉक, और आप 5 टाइम्स टूवर्ड्स द नॉर्थ जाएंगे। नॉर्थ जाने के बाद 1 एंड 2, 2 टाइम्स आप किस साइड जाएंगे, 2 टाइम्स आप लोग जाएंगे टूवर्ड्स दी वेस्ट। तो इसको हम लोग चेंज करके 2 टाइम्स बना देते हैं टूवर्ड्स दी वेस्ट। हमारा लास्ट स्टेप बचा है 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम्स हम लोग किस साइड जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी साउथ। एक बात का ध्यान रखिए, जितनी बारी भी आप टर्न लेते हैं, सपोजिंग आपका एक डायरेक्शन में तो 1, तो उतनी बारी आपका रिपीट ब्लॉक आ रहा है। ये दूसरा 2, ये तीसरा 3, ये 4th, ये 5th, ये 5। तो आप देखिएगा यहाँ पे जब आप रिपीट ब्लॉक्स को इस्तेमाल करेंगे तो भी देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 रिपीट ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं। इसका रीज़न भी यही है कि हम लोग एक्चुअली 5 टाइम्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए। Let us click on run and move forward. 1 2 3 4 and 5, 5 times south, 1 and 2 time west, 1 2 3 4 and 5, 5 times 1 2, then 1 2 3 4 and 5 times south, and we completed. We have successfully completed the challenge puzzle. Let us now move forward to the 12th one, sorry, the 11th one, and see what is lined up over there. In this, what will you see? That this has to go 1 2 3 4. So let's go 4 times towards, let's take the repeat block, make it 4 times towards which direction, west. Let us again take the repeat block, make it 2 times, go towards the north. See over here, why 1 and 2. After that, what will you do? You will again take a repeat block, or how many times? 4 times towards the east. See over here, 1 2 3 and 4, 4 times. After doing this, it's 1 and 2 times that we have to take towards the north direction. So let's take it, and it's 2 times towards the north direction. See over here, 1 2 3 4, 1 2, 1 2 3 4, 1 and 2, my kids. Okay, so now do not worry, we are on the last part and we're just about to complete the lesson number 6, the 12th puzzle of Pre-Express Code 2020 of code.org. I'm just waiting for the website to load in perfectly well. Oh, this is a very interesting. There are various ways to solve this puzzle. Let us see how we can solve this puzzle. One way will be that we can go in this direction like this and then move into this direction. The another way will be to move in this direction and then move in this direction. There are different ways to solve this puzzle. So let us see how we're going to solve this the most effective way. So over here you can just see 1 time towards the east, and then we can go toward north, east north, east north, east north, east and north. How many times? This is 1 time, this is 2 time, this is 3 time, this is 4 time, and this is 5 time. Let us see if this works in this manner or not. So let's take a repeat block, make it 5 times, and we're going to put a north and a east in it. Okay, or let's take a east or a north first. I think, let's see, it should be first east. Look, east and then north 1 time, east and north 2 time, east and north 3 time, east and north 4 time, east and north 5 times. So 5 times east and north, that pattern will work. Just see over here, east north 1 time, east north 2 time, east north 3 time, east north 4 times, east north, and in this way we'll be reaching the destination the 5th time. I hope you enjoyed today's course. Thank you for joining it, Kanishta Coders. I'll meet you in the next class.